Hello students, today's chapter is international trade, and in this chapter we have started with the introduction of international trade, which is the trade between two countries, country 1 and country 2. Let's say country India and country China. They are doing business, and the business at this scale is known as international trade. Whereas internal trade is at the country level trade. The previous chapter was internal trade, and now we are starting with the international trade. So in international trade, today's topic is WTO. I will tell you what is WTO, but before that let's briefly explain you what is the import trade and export trade, which we have already discussed in the previous video lessons. So import trade means whenever we purchase something from other country, this is known as import trade. So the procedure of import trade and the documents that are required in the import trade we have already done in the previous video lessons. And the export trade is a trade whenever we sell something to the other country. So when export trade is done, different type of documents are needed. These documents are different from import trade. So we have already discussed the export trade and the documents that are needed for export trade. Many new words now clear to you, because we have already discussed indent, bill of lading, import license, export license, railway receipt, dock charges, dock challan, different type of words I explained you in the previous video lessons to you. So today topic is WTO. WTO means World Trade Organization. This is the organization at world level. So I will start the topic, but firstly I will give you example so that it will more clear to you. So let's say this is a person A and this is a person B. Whenever there is a dispute between A and B, which are of same country, so for settling the dispute, where they come? They will go to the court. So whenever there is a dispute of the persons of same country, they go to the court of the same country. But when we talk about the international trade, that means they are the person doing the trade. One person is from India and the other person is from China. Whenever there is a dispute between two persons which belong to different countries, so to settle the disputes, if either they go to this country, let's say India, so India अगर अपने लोगों को ही सपोर्ट करेगा कि अगर वो इंडिया में कोई उनका डिस्प्यूट है, वो इंडिया के लोग हैं, वो इंडिया की कोर्ट में जा रहे हैं, तो इंडिया उनको सपोर्ट करेगा. इसी तरह ही अगर वो चाइना की कोर्ट में जाते हैं तो उनको चाइना के लोगों को चाइना की कोर्ट सपोर्ट करेगी. सो यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करे, एंड दिस इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. This is the organization at world level. I will explain you everything about that. But before that, I want to tell you that Information Trade Organization. This was the first one that was established, and after that United States of America इसने इसके अगेंस्ट बोला. दैट मीन्स वो इसको बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आए. देन कुछ लोग थे जो ये चाहते थे कि ITO एग्जिस्टेंस में आए, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो नेशन वाइज कुछ टैरिफ्स को हटाए एंड डिस्प्यूट्स को सेटल करे. इसके लिए GAAP एक एग्रीमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एस्टैब्लिश हुआ जिसमें कुछ एग्रीमेंट्स थे
और वो जनवरी 1 को 1948 को ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। बट उसमें वो ऐसे लोग थे जो इन लोगों से बाहर जो लोग एग्री कर रहे थे कि ITU एग्जिस्टेंस में आए, उन लोगों ने मिलके GAAP को एग्जिस्टेंस में लाया। देन इनमें कुछ चेंजेस करने थे जिसकी वजह से रिप्लेस कर दिया गया WTO को। दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, बट वो रिप्लेस किया गया इसको, ताकि इसमें कुछ नई इनोवेशंस हो सके, कुछ नई चीज़ें ऐड कर पाए। सो अगर हम ब्रीफली देखते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट में एग्जाम्पल क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड था वो सिर्फ गुड्स का ही था। दैट मीन्स गुड्स को बेचना ही यहाँ इस लेवल पे पॉसिबल था। बट अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट मीन्स अगर हम गुड्स डिलीवर करते हैं किसी दूसरी कंट्री को, और वी कैन ऑल्सो गिव सर्विसेज टू अदर कंट्रीज टू। सो दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज which belongs to WTO, World Trade Organization. One more thing is that multilateral trade. So what is multilateral trade? Trade among many nations. So World Trade Organization promote trade among many nations. Many nations, they can come into contact and they can do trade, and the trade can be of goods and services. Nowadays intellectual property rights are also included in that, so I will explain you in further. So trade of goods was at this level, and is in this level goods and services, so services are added at this level. Even we can give the services to the other country. So this was originated at January 1st, 1995. So GAAP was started in January 1st, 1948, and it was up to December 1994. And after that, WTO was established. Let us firstly see what is GAAP. GAAP means General Agreement on Tariff and Trade. It means while doing trade, tariff means duties, taxes. One word is tariff and the other word is non-tariff. So I will explain you, but this was the agreement on tariff and trade. So GAAP means General Agreement on Tariff and Trade. So it was the agreement regarding the trade. Trade means buying and selling of goods to the other country, and the tariff means tax related terms. It was the agreement that was for trade, that was established for trade, and some tariff duties which everybody wants to exempt. So it was established in January 1st, 1948, and the time limit was up to December 1994. So what is tariff? What is non-tariff? What is the meaning of it? Tariff means tax or duty to be paid on particular class of imports and export. Whenever we import and export, so whenever we purchase from other country and when we sell to other country, this is known as import and export. And whenever we do import and export, we pay some duties, some taxes. Just like I have told you about custom duty. When I told you about the import and export procedures, then मैंने आपको कस्टम ड्यूटी के बारे में बताया था जब मैंने आपको इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर डिफाइन किया था. सो टैक्सेस और ड्यूटीज,
जो हमें ट्रेड करना है, हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे सामान बेचना है या दूसरी कंट्री से खरीदना है, तो हमें कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती हैं, कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं। तो उनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं उन्हें टैरिफ बोलते हैं। दैट मीन्स टैरिफ मीन्स टैक्स और ड्यूटीज विच आर गिवन फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। कुछ भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर हमें कितना टैक्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज टैरिफ। सो नॉन टैरिफ, व्हाट इज नॉन टैरिफ? दिस इज द टैक्स एंड ड्यूटीज गिवन बाय us on export and import on a particular class. But not non-tariff. Non-tariff means import quotas. Quotas means the amount, the quantity. There is a restriction on the import and export, the quantities we can send. Let's say we are purchasing something, so there are restriction on the quantities of the import and export. That means this much quantity we can sell and we can purchase. So import quotas means कि अगर quantity हम import कर रहे हैं कहीं से, तो उसकी quotas, उसकी quantity पे restrictions and import license. तो हमें import का license भी होना चाहिए था. This we have already explained in the previous video lessons. Import license and export license, तो वो हमें वो भी लेने पड़ते हैं पहले import और export को, जब हम import trade और export trade करते हैं। तो import license इसके बारे में, और import quotas ये non tariff चीज़ें होती हैं। सो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ये दो चीज़ें हैं जो इस एग्रीमेंट में डिस्कस की गई कि ये ट्रेड करते टाइम ये रिमूव होनी चाहिए। सो कुछ चेंजेस GAAT में चाहिए थे, जो जिसके रिगार्डिंग हमने उसके बाद हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया कि हम कुछ चेंजेस टैक्स में, ड्यूटीज़ में, लाइसेंस में एंड देन कोटेशंस, जो क्वांटिटी है हम बेचते हैं या खरीदते हैं उसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए हमें WTO को एस्टैब्लिश करना पड़ा। सो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश इन January 1st, 1995. So I will come to now the point WTO. What is the meaning of WTO? Now I will explain you. World Trade Organization WTO, which was established on January 1st, 1995 in Geneva, Switzerland. The headquarters are at Geneva, Switzerland. So the meaning of World Trade Organization is World Trade Organization is new globally recognized trade organization with the new name succeeding GATT, having a new vision and more power to promote international trade. It is to promote international trade and it is a new globally recognized. So it is a organization which is new globally recognized organization and the succeeding name of GATT. That means GATT was the previous organization and there are some new global recognized, it is new globally recognized trade organization with some new things in it, some new points in it, succeeding GATT. GATT के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ नए कंसेप्ट जो इसमें नए ऐड किए गए, हैविंग अ न्यू विज़न, कुछ नया विज़न था इसका। कौन सा विज़न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोर पावर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें कुछ ऐसी पावर्स को लेके आए वो कि जिसमें वो प्रमोट कर पाए इंटरनेशनल ट्रेड को। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग पावर to promote international trade, and here is with new vision. So what is new vision?
trade in services and intellectual property rights. So we have discussed that GATT was only regarding goods. So trade in goods, which was according to GATT, but trade in services and intellectual property rights, this was the new vision of World Trade Organization. So what is intellectual property rights? These are the rights given to the person for creation of their minds, just like patents. So these are the rights which are given to a person for using his brain, and these are given for some period of times. So trade in services and intellectual property right, this was a new vision of World Trade Organization. Next, it is a permanent organization and members driven rule based organizations. So the rules of the organization of World Trade was by member driven. That means some members, some nations, they come together and they do the organization, they run the organization, they do trade by some member driven rules, जिसमें कुछ लोग हैं जो उन रूल्स को बनाते हैं एंड उनको फॉलो करते हैं और ट्रेड करते हैं. प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए. सो दिस इज अ न्यू विजन. एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट हो, और ये कुछ नए विजन लेके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, बट इसमें कुछ नए एडिशंस हैं. GATT के बाद कुछ नए एडिशंस किए गए, बट एक नई टर्म आई कुछ नए विजन्स के साथ.